Under what transparent procedure the allocations for coal blocks were made by the screening committee in its 15th meeting held on March 6, 2000 to Messrs. Garuda Clays Limited, to Messrs. Jindal Steel and Power Limited, to Messrs. Jaiswal Neko Limited, to Messrs. Prakash Industries Limited, and Messrs. Raipur Alloys and Steel Limited. किस आधार पे दिया था? And under what transparent procedure did the screening committee in its 15th meeting held on March 6, 2000 were the conditions imposed on Monnet Ispat Limited varied? और मेरे पास ये स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट है, ये स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट है, और मेरे पास सारी प्रोसीडिंग है कि किस तरह से एलोकेशंस हुई. एप्लीकेशन आई मॉनेट इस्पात की, ये मिनट्स है, कोई और प्रोसीडिंग फॉर्मल नहीं. चर्चा हुई और कहा कि द स्क्रीनिंग कमेटी आफ्टर डिटेल्ड डिलिबरेशन डिसाइडेड टू अलॉट उत्कल B2 ब्लॉक subject to the condition that the party must achieve financial closure within 1 year of allotment of the block, failing which the allotment will be to do. कौन से ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर में आपने अलग कर दिया? ऐसा ही है जायसवाल नेको sponge iron plant. Representative of the party stated that 125 million tons of reserves in 4 block will be adequate for meeting the requirement of the sponge iron plant for a period of 30 years. After 91 million tons of reserves in block 4 will be adequate for 30 years. The screening committee after deliberation decided to allot Gare Pamak block 4 to Jaiswal Neko for meeting the requirement. उन्होंने कहा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट उनको दे दिया. पार्टी ने कहा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई बैंक गारंटी नहीं दी गई, बस कह दिया कि भैया मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये दे दो, बोला ले लो. और हर स्क्रीनिंग कमेटी जो मैंने आपको नाम दिया ऐसा ही हुआ. और कौन सी गाइडलाइंस थी वो गाइडलाइंस भी मैंने आपको इस कंपाइलेशन में दी है, एनेक्सर 1 गाइडलाइंस का. Application for mining of a coal block for quantity less than 1 million tons per annum in open cast mining and less than 250,000 tons per annum in underground mining would not be entertained. ये पहली गाइडलाइन. कि अगर आपकी इतनी रिक्वायरमेंट है, this will not be entertained. Preferably blocks in greenfield areas where basic infrastructure like road, rail, links is yet to be developed should be given to public-private sector. The areas where CIL has already invested in creating such infrastructure for opening new mines should not be handed over to the private sector. ये दूसरी guideline. Blocks offered to private sector should be a reasonable distance from existing mines and projects of CIL in order to avoid operational problems. Blocks already identified for development by CIL where adequate funding is on hand on site should not be offered. Public-private should be asked to bear full cost of exploration. For identifying blocks, the requirements of coal for about 30 years should be considered. फिर माइनिंग, these are guidelines. और ये उनके कार्यकाल में 1998 से 2003 तक 4 तक ये हुआ, वो ठीक है, उस पर कोई आपत्ति नहीं, वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है. बट आपने जो किया कितना घोर अन्याय किया. हमारी गाइडलाइंस देख लीजिए भैया, 2006 की गाइडलाइंस मैं आपको बताता हूं, और इसमें आपके एनेक्सचर A लास्ट डॉक्यूमेंट है, इसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शोइंग दैट द एप्लीकेंट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. भाई इनको दीजिए, आप ये डॉक्यूमेंट कॉपी दीजिए ना, आप कॉपी क्यों नहीं दे रहे? आप नहीं दे रहे, मैं आपको ना. चलिए मैं आपको दे. Certified copy of Memorandum of Association, audited annual accounts reports of the last 3 years, project report in respect of end-use plant, project report instead of end-use plant. If the report is appraised by a lender,
The appraised report should also be submitted. Other मतलब कि अगर बैंक ने lend किया है पैसा, उसकी report भी आनी चाहिए. Detailed schedule of implementation, milestones and timeline for each milestone for the proposed end-use project. Detailed schedule of exploration, milestones and timeline. Scheme for disposal of unusables containing carbon obtained during mining of coal. Demand draft of 1,000. Soft copy of details. Then allocations without the above accompaniments will be treated as incomplete and shall be rejected.